Hi friends, how are you? Hope you're doing good. So let's begin with today's alphabet and we'll start with O and the sound for O will be O. When we are saying O, it's just like Hindi but बोलते हुए अपने lips को थोड़ा O की shape में लाना है और जो sound है वो थोड़ा सा stress करके करना है O. O. So let's listen to the song and see the action. So इसमें हमें प्रिटेंड करना है कि जैसे हम लाइट ऑन और ऑफ करते हैं, दैट्स द एक्शन ऑन ऑफ एंड इसके लिए जो हम एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं जैसे ऑन, ऑफ, ओल्ड, ओपन, ऑस्ट्रिच। और इसके लिए जो हम एग्जांपल यूज़ नहीं करेंगे एज यू नो इट्स अ वोवल, और जैसे मैंने पहले भी बोला है वोवल की दो अलग तरीके से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो इसके लिए जो साउंड्स, जो एग्जांपल हम वेरी कॉमनली यूज़ करते हैं वो है जैसे वन, ONE वन। इसमें ओ की साउंड नहीं आती है, इसमें व की साउंड आती है। और आउट, सो इसमें आउ की साउंड आ रही है शुरू में। सो हम ये सब एग्जांपल्स ओ के लिए फोनिक्स सिखाते हुए नहीं लेंगे, अल्फ़ाबेट सिखाते हुए ABCD यू कैन टेक दिस एग्जांपल्स। So our next alphabet is P and sound for P will be pa, pa. And इसको जब बोलेंगे तो दोनों लिप्स को क्लोज करके हल्का सा प्रेशर के साथ बोलेंगे, और जैसे हिंदी में प और फ होता है उसका थोड़ा सा मिक्स है, इसको हम प नहीं बोलेंगे, प प। And let's listen to the song and actions. So you see we have to just close our lips and blow the candles and you can feel the air on your finger. और इसके लिए जो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि पिंक, पैन, pencil, pear. So you see when we are saying it we are not saying pen, we are saying pen. So be mindful about it. Our next alphabet is Q and Q को हमेशा U के साथ लिखा जाता है, QU. So actually दो अल्फ़ाबेट एक साथ आके एक साउंड बनाते हैं, क्वा क्वा. So let's listen to the song and see the action. So इसमें क्या है, दोनों हाथ एक साथ लाके और डक की तरह क्वैक क्वैक क्वैक, दैट्स द एक्शन. एंड एज यू नो इसके लिए बहुत कम एग्जाम्पल होते हैं. सो द एग्जाम्पल्स आर क्वीन, क्विल्ट, क्वेक, क्विज, क्वेल. Let's move on to next alphabet which is R and the sound for R will be R. इसको हम र नहीं बोलेंगे, we'll say R. Let's listen to the song and see the action. See my puppy licked a rag, See my puppy licked a rag when he pulls so hard. So it's like pretend like a puppy and pull the rag, जैसे पपी कपड़ा खींचता है, just like that. And just be mindful while teaching this. Again I'm telling you, it's not r, it's r. Sound will come from your tongue, r. And the examples which we can use for this are red, run, rise, rose, ring, rat. Our next alphabet is S and the sound for S will be S. And जैसे हिंदी में बोलते हैं स, साउंड वही है बट वी हैव टू प्रोनाउंस इज लाइक स नहीं बोलना है उसको, स. Let's listen to the song and see the action. Snake is in the grass, the snake is in the grass.
So action is just like snake. Snake is in the grass and just move your hand like snake is moving. और इसके लिए जो हम एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं जैसे या स्नेक, सिप, सिंक एंड स्पून, सन, सीड, स्टार. और इसके लिए जो एग्जाम्पल हमें यूज़ नहीं करने हैं वो हैं शीप, शिप, शेल. जो भी श से शुरू होता है वो हम लोग इसके लिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फोनिक्स में जो हम साउंड दे रहे हैं एस के लिए वो है स, और जो श साउंड है वो एस और एच को एक साथ ला के इट्स एन डायग्राफ साउंड. सो वी आर गोइंग टू कवर दिस अगेन सेपरेटली and so avoid using these examples. Our next alphabet is T and the sound for T will be T. T. जैसे हिंदी में हम ट बोलते हैं वैसे ट नहीं बोलेंगे, साउंड वही है, उसको प्रोनाउंस करने का तरीका ट, ट. So let's listen to the song and see the action. When I watch the tennis game, when I watch the tennis game, my head goes back and forth. So you have to pretend as if जैसे टेनिस मैच देखते हैं उसमें your head will go left and right. So वही एक्शन है, back and forth. एंड इसके लिए जो एग्जाम्पल हम लोग यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ये है टेनिस, टेन, टेबल, टेन, टॉय, टब. सो जब हम इसकी ट की जो साउंड निकाल रहे हैं हम लोग टब नहीं बोल रहे हैं. इफ़ यू आर प्रोनाउंसिंग एज पर जॉल फोनिक्स इट्स नॉट टब, इट्स टब, टेल, टाइगर. That's all for today. Hope my videos are helpful for you. So keep watching and keep practicing. And if you like my videos, please click on the like button and share with your friends and family and subscribe to my channel. See you in my next video.